So now we are going to start with image sensing and acquisition. So basically images, आपको image में क्या दिखता है? It is a combination of two things. One, it is combination of the source of illumination that you have. कि वहाँ का lighting कैसा है, okay? And the reflection or absorption of the energy from that source by the element of the scene that is being imaged. So I'll tell this to you in a very simple set of words. There's a light in the room, okay? There's a bulb in the room. That is your source of illumination. You're trying to take the photo of the table. That table is the scene that is being imaged. अभी वो टेबल कितना लाइट रिफ्लेक्ट करता है या कितना लाइट एब्जॉर्ब करता है ये मैटर करेगा, एंड वो सोर्स कितना लाइट दे रहा है ये मैटर करेगा. आई होप दैट इज प्रीटी क्लियर. नाउ whenever I say that I'm going to capture the image, obviously I need a sensor. I need something that will sense the light, and then that light energy will be converted to some other form of energy. So there are three principal sensor arrangements that we have. The very first thing is a single sensing element. You can see over here. The energy is coming, there's a filter, there's a sensing material, and you are getting the output in a voltage form. Housing is nothing but it is a cover to the sensor. Internal जो components है sensor के उसको cover करने वाला housing है. So casing उसका basically. Housing मतलब और कुछ नहीं, casing, and this is your power supply. ठीक है? So the incoming energy is transformed into the voltage plus pulse by input electrical power, and the sensor response where the digital quantity is obtained by digitizing the response. So जो भी energy आता है power के help से उसको आप voltage waveform में convert करोगे. अभी ये जो एक सेंसर था, ऐसे मल्टीपल सेंसर्स मैंने एक सिंगल लाइन में लगा दिए. सो व्हाट आई गेट इज अ लाइन सेंसर. सो एवरी बॉक्स दैट यू कैन सी ओवर हियर बेसिकली इज वन सेंसिंग एलिमेंट. ओके, एवरी बॉक्स दैट यू कैन सी ओवर हियर इज वन सेंसिंग एलिमेंट. नाउ इमेजिन आई टेक मल्टीपल ऑफ दीज लाइन सेंसर्स एंड स्टैक देम वन अपॉन द अदर. What I will get is an array sensor. I hope you are understanding. Line sensor is also made up of multiple of such sensors, and array sensor is also made up of multiple of such single sensors. Okay, it is just the collection and the arrangement of the sensors. ठीक है, simple है. Now, a very common sensor is something which is called as photodiode, जो silicon material से बनता है and जिसका output voltage is proportional to the light. लाइट जितना होगा उतना वोल्टेज होगा. ओके, नाउ द फिल्टर इन द फ्रंट ऑफ द सेंसर, इट इम्प्रूव्स द सिलेक्टिविटी. आपको अगर कोई लाइट नहीं चाहिए, आपको टोन डाउन करना है कुछ चीजें, सो यू कैन यूज द फिल्टर अकॉर्डिंगली. अगर 2D इमेज चाहिए यूजिंग अ सिंगल सेंसर, देयर हैव टू बी अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शंस बिटवीन द सेंसर एंड एरिया टू बी इमेज्ड. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ही सेंसर है एंड मुझे पूरा इमेज कवर करना है. ओके, सो व्हाट आई नीड टू डू, कंसिडर दैट दिस इज अ इमेज. ओके, एंड लेट्स से दिस ग्रीन कलर इज अ सेंसर. सो ये सेंसर सबसे पहले यहाँ पे रखोगे, फिर इस डायरेक्शन में मूव करोगे उसको, फिर उसको नीचे लाओगे, यहाँ पे रखोगे, फिर से इस डायरेक्शन में मूव करोगे. सो इन शॉर्ट व्हाट यू वांट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंसर इन द एक्स डायरेक्शन ऑल्सो एंड इन द वाई डायरेक्शन ऑल्सो. ओके, नाउ द अरेंजमेंट used in high precision scanning where a film negative is mounted onto a drum whose mechanical rotation provides displacement in one dimension. So basically हम लोग क्या करते हैं ना, एक लाइन सेंसर लेते हैं एंड उसको ड्रम पे रोटेट करते हैं. सो वो लाइन सेंसर पूरे ड्रम पे ऐसे रोटेट करेगा एंड इमेज को स्कैन करेगा. सो अ सिंगल सेंसर इज माउंटेड ऑन द लीड स्क्रू दैट प्रोवाइड्स मोशन इन द परपेंडिकुलर direction. So you need to have some way or the other to move your sensors. You either take a sensor and move it like this,
or maybe you put a sensor on the drum. So suppose this is a drum will provide the motion in one direction. Suppose ये direction में drum move कर रहा है, so ऐसे drum move करेगा, आपका sensor left right move करते रहेगा. Are you getting it? So your sensor need not move up and down. Up and down movement drum आपको करके दे रहा है, आपका sensor सिर्फ left and right move करेगा. I hope you have understood this. Pretty simple.